Very good morning, friends. I hope you're all safe and healthy. Well, in this particular month, I have been talking of some important aspects on Indies 2, and a couple of videos previously were on NRV. And today, my last video, as far as the concept of NRV is concerned, I'm taking another inputs on that area, and that is what is the role of the purpose of inventory in the computation of NRV. In the sense, let's say, for example, an entity has already entered into a contract with a customer. Is my NRV going to be taken on the basis of the journal prices prevailing in the market? Or am I going to consider the contract price with which the customer has contracted with me? Para number 31 of Indies 2 gives us more insight on this particular area. Let's find this in detail. What does the para number 31 state? समय कितना बचा है? अरे यार, समय तो बहुत कम बचा है और इस समय का आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अनअकैडमी पर आपको सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के अंदर इस वक्त कल यानी कि 23 फरवरी तक एक्स्ट्रा ऑफर मिल रही है। 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 1 महीना एक्स्ट्रा, 12 मंथ्स पर आपको मिलेंगे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और 24 मंथ्स पर आपको मिलेंगे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा। लेकिन ये ऑफर कल रात 12 बजे तक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी इंटरमीडिएट के अंदर भी आपको 12 मंथ्स पर 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 18 मंथ्स पर आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा और 24 मंथ्स पर 4 मंथ्स एक्स्ट्रा। साथ में मेरा कोड लगाइए CAKB10 और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मंथ्स भी मिलेंगे और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। बढ़िया। और ये नहीं, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। संडे को 27 को आप अपने आप को 12 बजे बेटा फ्री रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका एक कॉम्पैक्ट कंपटीशन है, विच इज अ मेगा कॉम्पैक्ट कंपटीशन, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस आंसर करने होंगे लाइव इन 60 मिनट्स। जो आपके जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है उनमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और इस पर आपकी रैंकिंग के बेसिस पर आपको मिलेंगे खूब सारे इनाम। 1 करोड़ के पूल में से आप इसके अंदर जीत सकते हैं HP लैपटॉप, आप जीत सकते हैं सैमसंग का टैब, आप इसके अंदर जीत सकते हैं इसके अंदर घड़ियां, ओ माय गॉड, और साथ में अमेजॉन के वाउचर्स। तो इस बार अपने आप को नोट कर लीजिए, 27 फरवरी 12 बजे। सर इसके लिए करेंगे क्या? बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। अगर आप प्लेटफॉर्म में पहली बार हैं तो मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए CAKB10 और उसे अनलॉक करके कंपटीशन के लिए रजिस्टर कीजिए और इनाम जीतिए। लेट्स क्रैक इट। Para 31 states that estimates of NRV also takes into account the purpose for which the inventory is held. It tells you, for example, the NRV of the quantity of inventory to satisfy a firm's sales or a service contract is based on the contract price. Now, let's imagine that the company is entered into a contract with a customer, and let's say it's a total of 1,000 units and they've got total 1,000 units itself in the inventory. The entire inventory the company has got is, let's say, being produced against a specific customer order. So in this particular case, when you calculate the NRV of the inventory, I would consider the NRV not as the estimated selling price, but I'm going to consider the contract price. But let's say, for example, if the company has got some excess inventory, as it says further, that if the sales contract is for less than the inventory quantity held, the NRV of that excess is based on the journal selling price. So let's say, for example, in the same case, the company has got, let's say, a total of 1,800 units with them and the contractual inventory is only 1,000. So you would take the NRV for those 1,000 units based upon the contractual price, but for that 800 excess units, we're going to consider the journal selling price itself. That means the company needs to sit down on the balance sheet date and evaluate that what is the portion of inventory, for which a contract has been entered into.
The NRV of that inventory is based on the contract price and not the journal selling price. But for the portion of the inventory which is a journal inventory for which there is no customer order, you're going to take the inventory based on the estimated selling price, which is the journal price prevailing in the market. So that also means that it is quite possible that for inventory which is produced against a customer order, the valuation of the NRV is more, so the inventory stands valued at cost. But maybe for the other inventory, the inventory could be measured, let us say, at the NRV because the NRV is less. So that means the inventory needs to be segregated into two components, contractual and journal, and accordingly the NRV computations will be done. Isn't that pretty interesting aspect of the NRV? That's all in this particular video. Thank you for watching. Take care and goodbye.